Good morning to all of you. So आज आमे 12 नंबर मॉक टेस्ट जोड़ा हेतिला छटा क्वेश्चन रो ताको आज आमे डिस्कस करबा तार आंसर राइटिंग केमती करा जिवो आइडियली in the format of say same introduction body and conclusion introduction और conclusion हमें brief रखिबा and body रे हमें subheadings and in bullet points गोटे proper body structure करिके और जोठी भी example देई हबो जोठी भी relevant example जो जगह applicable सेटा दबा but before that before starting the discussion class just मते टे क्लियर कर दियंतु कि मु जहा कहूची ऑडियो एंड एटी जहा भी एनोटेट करूची एंड गोटे पीपीटी एटी ओपन करची जोथरे कि आंसर राइटिंग डिस्कशन क्लास एमते लिखा आइची तो ऑडियो और वीडियो बोथ क्लियर अछि कि नहीं आई एम गिविंग 1 मिनिट टू ऑल ऑफ यू जे भी लाइव अछंती तांको भितरु केही जणे भी क्लियर कर देले हबो बट आफ्टर दैट आई विल जस्ट अज्यूम कि सब किछि क्लियर अछि एंड आई विल स्टार्ट द डिस्कशन क्लास ओके तो पर क्वेश्चन सब क्लास रे जेमती मु 10 टू 15 सेकेंड्स दिए निजे टिके पढ़िया को एंड कांसेप्ट टिके निजे बुझिया को एंड ब्रेनस्टॉर्म करिया को सेमती मु देबी पर क्वेश्चन 10 टू 15 सेकेंड्स टाइम इंट्रोडक्शन आमर ब्रीफ रहिबो कंक्लूजन भी ब्रीफ रहिबो बट ता सहित कंक्लूजन आमर पॉजिटिव लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग गोटे ऑप्टिमिस्टिक एंगल ताकू दबा कंक्लूजन को जदि जहां भी किछि कांसेप्ट हेवी टॉपिक्स अछि से कांसेप्ट को भी हमें डिटेल्स रे कवर करिबा ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फर्स्ट क्वेश्चन एटी स्क्रीन ऊपर अच्छी तो समस्ते एटी पढ़िबे फर्स्ट मु पढ़ दउची डिस्टिंग्विश करिया कहिची बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द इंडियन बजट बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन बिफोर एड्रेसिंग एनी क्वेश्चन फर्स्ट एटा देखिबे कि क्वेश्चन र डिमांड कोन एमति नै कि प्लान और नॉन प्लान ऊपर जदी क्वेश्चन अछि तो जहां भी जानछन प्लान नॉन प्लान डेवलपमेंट ऊपर सेटा लिखि दे आसीबे नै क्वेश्चन डिमांड एटा फर्स्ट कहिची कि प्लान ए दीटा भितरे डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट करिबाकू इन इंडियन बजट हाउ डिड दिस क्लासिफिकेशन इन्फ्लुएंस फिस्कल प्रायोरिटाइजेशन एंड व्हाई इट वाज इवेंचुअली एबोलिश्ड एटा इंपोर्टेंट ए जो क्लासिफिकेशन टा थिला सी फिस्कल प्रायोरिटाइजेशन को केमिति इन्फ्लुएंस करूतला सेकंड डिमांड एटी हमें फर्स्ट देखिले एटा फर्स्ट हमको एड्रेस करिवार अछि देन ताकू परे कोन पई कि 17 18 बजट परे ताकू अबोलिश कर दिया गला एटी मु कहि देली सेटा हमें बॉडी रे इंक्लूड करिया ताकू अबोलिश कोन पई कर दिया गला 10 सेकंड्स होची एटी क्वेश्चन पढिबाबू समस्ते रीड द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन पढ़ले समस्ते ठीक अछि एबे हमें इंट्रोडक्शन फर्स्ट we will write a brief introduction on the subject matter जहा क्वेश्चन पचारछि ता ऊपर गोटे brief introduction आगा में दबा क्वेश्चन कहिछि प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऊपर अछि तो एंड से कहिछि कि फिस्कल प्रायोरिटाइजेशन को केमिति इन्फ्लुएंस करूतला आगुरु एंड तापरे ताकू केमिति अबोलिश कर दिया गला सो पूरा टोटल क्वेश्चन टा हमें पढ़िले एंड इंट्रोडक्शन हम एमती दबा कि अंटिल 2017 जाए कौन होतिला मु एठी गोटे जिंस कहि दउची जहा भी एठी क्वेश्चंस अछि तार जो इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन वे रे एठी जो आंसर मु फ्रेम करबी
बहुत जगह मु जस्ट कीवर्ड्स मेंशन करी, बहुत जगह मु शॉर्टकट्स मेंशन करी, एमती नहीं ना कि मु पूरा 250 आंसर्स 250 वर्ड रे आंसर एठी मु पूरा लेखिकी जीबी स्क्रीन रे। ओके, मो मो ड्यूटी होची कि एठी मु समस्त को बुझेई देबी कि कौन कौन इन्फॉर्मेशन देबे, केमिति केमिति देबे। सो आई वुड हाईली एडवाइज कि समस्त पेन एंड पेपर कॉपी पेन नहीं की बसिबे, जदि जो माने ई नोट्स बनाउछन्ती टैब्स एंड ऑल से माने नहीं की बसिबे, एंड से सांगरे सांगरे मु जहाँ भी इन्फॉर्मेशन दोची ताको नोट डाउन करिवे। ठीक अछि, एंड जोठी जहाँ भी बुझी न हबो से माने आई एम ओपन कि समस्त एठी लाइव चैट रे मते पचारिबे, तो मु थरे हो दी थर हो समस्त को बुझेबी। एंड जेतेबेले जहाँ भी डाउट होची सेई टाइम रे पचारंतु, एमती नहीं कि जदि नंबर क्वेश्चन नंबर 1 रे किसी डाउट अछि ताकू 3 नंबर कि 4 नंबर क्वेश्चन आडको पचारिबे नहीं। सो ओके, अंटिल 2017 कोन होतला, इंडिया रो जो यूनियन बजेट थिला क्लासिफाइड तार जो एक्सपेंडिचर, यूनियन बजेट हिसाब रे जो एक्सपेंडिचर थिला से ताको क्लासिफाई करूथला इनटू प्लान एंड नॉन प्लान, नॉन प्लान कैटेगोरीज। ठीक अछि, टू डिस्टिंग्विश डेवलपमेंटल स्पेंडिंग, रूटीन स्पेंडिंग केमती हबो, कमिटेड एक्सपेंसेस एंड ऑल। एंड ए जो सिस्टम टा थिला सेई टाइम रे इट शेप्ड द फिस्कल डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली इट शेप्ड फिस्कल डिसीजन मेकिंग फॉर डेकेड्स, किंतु पछरे ताकू कोन कर दिया गला, जोटा क्वेश्चन रे भी मेंशन अछि, लेटर इट वाज एबोलिश्ड। एंड एबोलिश कोन पई करा गला, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, फर्स्ट आमे बॉडी रे एड्रेस करिबा फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि प्लान आउ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भितरे डिस्टिंग्विश करबा को कहितिला, डिफरेंस टा कोन? प्लान एक्सपेंडिचर तार मीनिंग एंड फीचर्स हमें देखिबा। प्लान एक्सपेंडिचर को लिंक करा जाउथला जो हमरो 5 ईयर प्लान्स थिला ता सहित एंड अप्रूव्ड स्कीम्स, एथिरे फोकस करा जाउथला ऑन डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल एथिरे स्पेंड होथिला ऑन हेल्थ, एथिरे इंक्लूड हुए होथिला आई मीन एजुकेशन, देन पोवर्टी एलिविएशन हे गला, इंफ्रास्ट्रक्चर हे गला, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट। प्लान एक्सपेंडिचर फर्दर दीटा कंपोनेंट थिला, गोटे होची प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स, सब्सिडीज, एंड सेकेंड थिला प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रे कोन जाउतिला, फॉर एग्जांपल रोड्स बा पावर प्लांट्स हला। ओके, सेकेंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तार मीनिंग एंड फीचर्स कोन? से सब एक्सपेंडिचर जोटा कि डायरेक्टली टाई हो नथिले 5 ईयर प्लान सहित, नॉट डायरेक्टली टाइड टू 5 ईयर प्लान्स। मोस्टली से माने कमिटेड और ऑब्लिगेटरी इन नेचर थिले, ऑब्लिगेटरी इन नेचर थिले। फॉर एग्जांपल सैलरीज, पेंशन्स बा इंटरेस्ट पेमेंट हला ऑन पब्लिक डेट, कि डिफेंस सर्विस, मेंटेनेंस हला ऑफ एक्जिस्टिंग एसेट्स। ओके, लार्जली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थला विथ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिडक्शन। आमे एठी तार मीनिंग एंड फीचर्स डिस्टिंग्विश करिकि देखिले। सेकेंड, फिस्कल प्रायोरिटाइजेशन उपरे तारा इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑल फिस्कल
prioritization. Fiscal prioritization ଉପରେ ତାର କ'ଣ influence ଥିଲା? Actually ସେଟା ଗୋଟେ false differentiation ବା ଗୋଟେ binary differentiation create କଲା. Created a false binary between developmental and non-developmental. Developmental गुड़ाक जाउथिला आमे देखिले प्लान रे and non-developmental गुड़ा जोगुड़ा प्लान रे न जाउथिला से गुड़ी को non-developmental बा non-plan रे जाउथिला. So it encouraged launch of new schemes over funding maintenance and existing asset. जो स्कीम गुड़ा आगुरु चला होतिला तार मेंटेनेंस बा फंडिंग उपरे एतेटा ईयर ऑन ईयर ध्यान न देकी they just focused on launching new schemes. Over maintenance or funding the older ones. Okay. And for example, इथि जदि देखिबा से टाइम रे अंडर इन्वेस्टमेंट इन टीचर सैलरीज, हॉस्पिटल अपकीप, इरिगेशन रिपेयर ए सब भी हैला. अंडर इन्वेस्टमेंट इन सैलरीज, हॉस्पिटल अपकीप बा इरिगेशन रिपेयर्स ए सब प्रॉब्लम देखा गला. सो आ फल रे कोन हैला बजेट प्रायोरिटीज रे डिस्टॉर्शन आसिला. इट क्रिएटेड distorted budget priorities. इवन जो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस थिला लाइक डिफेंस और पोलिसिंग से गुडी को भी नॉन प्लान रे ताको इंक्लूड कर दिया जाइतिला. देन इट वीकेंड आउटकम बेस्ड बजेटिंग जोटा कि फोकसिंग मोर ऑन इनपुट्स दैन रिजल्ट. से माने इनपुट ऊपर बेसी फोकस करूतले, रिजल्ट ओरिएंटेड इनपुट्स ऊपर से माने फोकस करूनतले. 4 रीजन फॉर एबोलिशन. From 2017 to 18 budget 5-year plans रो जेते बळे एंड हैला एंड सेटा जेते बळे नीति आयोग द्वारा रिप्लेस करा गला सेते बळे रिकॉग्नाइज कले जे जो डेवलपमेंट इट ऑकर्स थ्रू आल्सो रूटीन एंड मेंटेनेंस. They are very crucial for development. खाली नुआ स्कीम लॉन्च कले कि फॉर एग्जांपल नुआ हॉस्पिटल्स गुडा खोलिले डेवलपमेंट हबनी. So for growth or development, routine and maintenance spending is also important. And सेतबळे आसिला गोटे मोर rational classification. Capital versus revenue expenditure. तापर आसिला capital versus revenue expenditure. And it aimed to fiscal transparency, second to improve the efficiency, and third better alignment with outcomes and asset creation. Okay, एबे conclude करिबा आंसर. Conclusion: abolition of plan and non-plan जो classification थिला, it marked a shift towards more realistic and outcome oriented budget framework. And जो capital creation और efficient revenue use ऊपर जो focus करा गला, India strengthened its fiscal prioritization and laid the foundation for sustainable and inclusive development.
Clear? Next question. Classify the different types of government receipts in India. Examine the relative importance of tax and non-tax revenues in ensuring fiscal sustainability. Read the question. Okay, so कौन कही question? Classify different types of जो government receipts अच्छी revenue है ला capital है ला तो different types of government receipts को first classify करिबा को कही then तांकर जो importance अच्छी of tax and non tax revenue रो ताकू examine करिबार करिबा को कही in ensuring what? In ensuring the fiscal sustainability. Okay, first of all introduction जो government receipts रहिला government receipts सेगुड़िक होची all financial inflows to the state. And तांकर जो composition और quality अच्छी they critically determine the fiscal stability, developmental capacity and long term sustainability. Clear? First हमें करिबा classification of government receipts in India. Revenue receipts. रेवेन्यू रिसीट्स एक्चुअली किछि एमाने लायबिलिटीज क्रिएट करंतिनी कि एसेट रिड्यूस करंतिनी एटा होउची एंकर फीचर दैट दे डू नॉट क्रिएट लायबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट भी हमर दी प्रकार अछि गोटे होची टैक्स रेवेन्यू आ गोटे होची नॉन टैक्स रेवेन्यू रे कोन जाय बोथ दीटा टैक्स रेवेन्यू भी दी प्रकार गोटे होची डायरेक्ट टैक्सेस आ गोटे इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स रे हमर एग्जांपल हमर आईटी जाउची माने इनकम टैक्स जाउची कॉर्पोरेट टैक्स जाउची एंड इनडायरेक्ट टैक्स रो सबुठर बड़ एग्जांपल तो समस्त जानथिबे जीएसटी देन कस्टम्स एंड एक्साइज. ओके नॉन टैक्स रेवेन्यू जेमति की लोन ऊपर जहा इंटरेस्ट रिसीव होची. So the interest receipts on loans, dividends से गला, profits से गला जहाँ PSU, RBI, surplus, etc. And एथिरे fees, fines, penalties, spectrum charges भी include होची. Then
कैपिटल रिसीट्स एटा हमें तो देखिले रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट रो मने रखिबे ए दीटा फीचर दिस इज द फीचर कि से कोन से लायबिलिटी क्रिएट करिवेनी कि कोन से एसेट को रिड्यूस करू नथिबे ताहाले से गुडी होउची रेवेन्यू रिसीट देन कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल रिसीट रो फीचर कोन कि एमाने लायबिलिटीज प्रोड्यूस करिवे बट दे विल क्रिएट लायबिलिटीज और they will reduce the assets जेमती की तार दी प्रकार अछि गोटे होची डेट रिसीट्स रे कोन हमर जहा इंटरनल बोरोइंग्स रहिला स्मॉल सेविंग्स एंड एक्सटर्नल लोन्स एटा जाउची डेट रिसीट रे तापरे नॉन डेट कैपिटल रिसीट रे जिवो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स देन हमर इथरे जिवो जहा भी लोन्स रिकवरी होची जदि लोन्स गवर्नमेंट देइथिबो कहा को एंड से लोन को रिकवर कला रिकवरी ऑफ लोन्स एंड देन सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स ओके एबे हमें देखिबा तांकर इंपोर्टेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर फिस्कल सस्टेनेबिलिटी इंपोर्टेंस कौन फर्स्ट नोट डाउन करो समझते कि दैट दे फॉर्म लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल सोर्स ऑफ रिसीट्स एगुडी को लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल सोर्स ऑफ व्हाट ऑफ रिसीट्स एंड प्रेडिक्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी को माने इंश्योर करंती इन फंडिंग द पब्लिक सर्विसेज ensures the predictability and continuity in public services जो प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस हैला से गुडी को इक्विटी को प्रमोट करंती एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रमोट करंती प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव माने होची इनकम बढ़िबा सहित तमरो जो जेति कि टैक्स पेमेंट करिवे लोक माने तांगर इनकम बढ़िया सहित सेटा भी बढ़े सो इट इज प्रोग्रेसिव ताको कहंदी इट प्रमोट्स व्हाट इट प्रमोट्स इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड जो जीएसटी जेबेठारो लॉन्च हेची इट इम्प्रूव्ड द बायंसी एंड कॉम्प्लायंस थ्रू व्हाट थ्रू फॉर्मलाइजेशन ओके देन आउ गोटे इंपोर्टेंस कौन हम रिड्यूस्ड ओवर डिपेंडेंस ओवर डिपेंडेंस ऑन व्हाट ओवर डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग सो जेतोले बोरोइंग ऊपर डिपेंडेंस रिड्यूस होची ताहले फिस्कल डेफिसिट भी कोन हबो फिस्कल डेफिसिट भी लोअर हबो तापरे रोल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट एटा प्रोवाइड करूची डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू सोर्सेस जो पीएसयू डिविडेंड्स रहिला आरबीआई रो सरप्लस रहिला दे ऑफर काउंटर साइक्लिकल सपोर्ट यूजर चार्जेस जो रहिला दे इंप्रूव द कॉस्ट रिकवरी एंड एफिशिएंसी however जो volatile and non recurring जेमती spectrum auctions रहिला limited growth potential compared to the taxes relative assessment tax revenue actually is the backbone of fiscal sustainability tax revenue backbone of fiscal sustainability and जो non tax revenue रहिला
सी गोटे सपोर्टिंग एंड स्टेबलाइजिंग रोल प्रोवाइड करती ओवर रिलायंस ऑन एसेट सेल्स बा डिविडेंड्स हैला से इज फिस्कली इम्प्रूडेंट ओके कंक्लूजन जेतेबेले tax revenues they ensure stable and equitable fiscal capacity. On the other hand, जो non tax revenue रहिला they enhance the resilience and efficiency. So गोटे balanced strategy दरकार for tax base expansion, better compliance and rational non tax pricing and এই সবু দরকার এই সবুর গোটে ব্যালেন্স স্ট্রাটেজি দরকার ফর সস্টেনেবল এন্ড রেসপন্সিবল পাবলিক ফাইনান্স. Next question. Discuss the various types of government expenditure with special reference to revenue and capital expenditure. How does this distinction affect long-term economic growth? Read the question. क्वेश्चन कही जो वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अच्छी ताको डिस्कस करबा को बट विथ स्पेशल रेफरेंस टू रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय कैपेक्स. हाउ डज दिस डिस्टिंक्शन अफेक्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ये जो डिस्टिंक्शन बा डिफरेंस अच्छी एटा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को केमिति अफेक्ट बा इन्फ्लुएंस करची ताको डिस्कस करबा को कही. इंट्रोडक्शन. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहले कौन बुझो? Government expenditure, it refers to all the spending by state for administration, welfare and development, and the composition, it is mainly the balance between, especially the balance between revenue and capital expenditure, and तार गोटे decisive impact रही on economic growth. And fiscal sustainability. First होची classification of government expenditure. Revenue expenditure. Revenue expenditure रे कौन हुए? कौन सी asset create हुए नहीं. No asset creation. So एटा होची कौन? एटा होची actually जो day to day जो ऑपरेशनल एक्सपेंस रही गवर्नमेंट रो सेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे जाए, व्हिच इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल salaries, pensions, interest payment on public debt बा subsidies जहाँ दिया होची,
स्टेट्स मानक जो ग्रांट दिया होची सब जाउची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे व्हिच इज द डे टू डे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर गुड़ा सब होची मोस्टली एगुड़ी को कौन थांती मोस्टली एगुड़ी को होची कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड recurring in nature. On the other hand, capital expenditure जो रहिला it creates assets. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएशन होनी किंतु कैपिटल एक्सपेंडिचर रे कोन हबो कि एसेट क्रिएट हबो एंड लायबिलिटीज भी रिड्यूस हबो सो इट इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड स्पेंडिंग जो थरे कि फॉर एग्जांपल एसेट एथरे क्रिएट होची तो समस्ते एठू इमेजिन करि पारथिबे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली एथरे इंक्लूड होतिबो सो इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हॉस्पिटल्स हैला स्कूल्स हैला एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एथिरे लोन्स जीवो जो लोन्स टू स्टेट्स रिमेंबर ग्रांट्स होची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीवो एंड जहाँ स्टेट मानको जो लोन दिया जीवो सेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर जीवो ओके कहीं ना लोन टाको एसेट हिसाब रे इथपाई निया जाए कि जेतेबेले स्टेट माने लोन को रिपेमेंट करिवे से केवल प्रिंसिपल तो देबे नि से माने ता ऊपर इंटरेस्ट देबे सो इट इज एन एसेट एंड जो स्टेट को की पीएसयूज को लोन्स दिया जाउची सेटा भी एथरे जाउची इक्विटी इन्फ्यूजन इनटू पीएसयूज रे जो इक्विटी इन्फ्यूज होची सो ए सबुर गोटे जिनस कॉमन समस्या देखि पारथिबे कि एसेट क्रिएट होची आ प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक्सपेंशन होची डिफरेंशिएट करके देखिले देन अदर फंक्शनल क्लासिफिकेशंस अदर फंक्शनल क्लासिफिकेशन रे हमर जीवो कि डेवलपमेंटल वर्सेस नॉन डेवलपमेंटल आ गोटे प्लान वर्सेस नॉन प्लान जोटा कि 2017 ऑनवर्ड्स एटा एबोलिश हे जाइछि प्रीवियस क्वेश्चन रे एटा ऑलरेडी डिस्कस हेछि अर्लियर डिस्टिंक्शन इट वाज लिंक्ड टू 5 ईयर प्लान्स जोटा कि एबोलिश हे जाइछि डेवलपमेंटल वर्सेस नॉन डेवलपमेंटल रे कोन जाउछि जेमति कि हेल्थ हैला एजुकेशन हैला एग्रीकल्चर हैला इगुडा डेवलपमेंटल जाउछि और नॉन डेवलपमेंटल रे कोन जाउछि डिफेंस इंटरेस्ट पेमेंट्स एगुडी नॉन डेवलपमेंटल जाउछि थर्ड impact of revenue capital distinction on long term growth capital expenditure and growth on long term growth so capital expenditure and growth देखिबा capital expenditure and growth it builds physical and social infrastructure private investment ro crowd in भी एथरे जाउची it raises the productivity and also employment भी raise होची for example national infrastructure pipeline NIP revenue expenditure and growth रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे कौन हुए ह्यूमन कैपिटल को सपोर्ट मिलुची ह्यूमन कैपिटल सपोर्ट फॉर एग्जांपल हेल्थ ऊपर स्टेप्स निया जाउची एजुकेशन इट एंश्योर्स सोशल स्टेबिलिटी केमिति वाया सब्सिडीज वेलफेयर स्कीम्स किंतु एक्सेसिव जदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हबो इट विल क्राउड आउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फिस्कल डेफिसिट को आउ डेट को भी एटा वर्सन करि पारे
Fiscal policy implications. Higher capital to revenue ratio improves যদি higher capital to revenue ratio ହବ ତାହେଲେ ଏଟା ଦିଟା ଜିନିଷକୁ improve କରେ ଗୋଟେ ହଉଛି growth potential and intergenerational equity. Okay, so shift towards capex led growth seen in recent union budget. Okay, conclusion. ये जो revenue और capital distinction रहिला, it is very useful or is central to the growth oriented fiscal policy. ଯେତେବେଳେ କି जो revenue spending ଅଛି it sustains welfare, stability and जो capital expenditure रहिला it drives the long term productivity and prosperity. ଗୋଟେ calibrated shift towards quality public investment, it can anchor India's path to inclusive and sustainable economic growth. Next question. Assess the significance of art and architecture during the period in reflecting the socio-religious transformation of ancient India. Read it. Read the question. କହିଲା କି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ର जो सिग्निफिकेंस थिला गुप्ता पीरियड रे ताकू एक्सेस करबाकू इन रिफ्लेक्टिंग द सोशियो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया. गुप्ता पीरियड जोटा की थिला 4th to 6th century CE एटा को normally or often called as India's golden age. जोटा कि गोटे हाई पॉइंट मार्क करथिला इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके एंड ये जो सेतबळे जो डेवलपमेंट्स गुडी को हेतिला दे विविडली रिफ्लेक्टेड द सोशियो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, स्पेशली जोटा कि ऑलरेडी क्वेश्चन रे मेंशन हेची सोशियो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, स्पेशली consolidation of Brahmanism and maturation of Buddhist and Jain traditions. Religious transformation. Religious transformation reflected in art.
So there was a shift from symbolic to anthropomorphic representation of deities. Anthropomorphic representation of deities. And ସେତେବେଳେ iconic images ର emergence ହେଲା. Iconic images of Vishnu. For example, Dasavatara temple, କୋଉଠି ଅଛି? ଦେଓଗଡ଼. Shiva, linga worship and temple reliefs, and Buddha, Sarnath and Mathura schools. And it indicate kala the rise of bhakti tradition and personal religiosity. Personal religiosity. Second, temple architecture and Brahminical revival. Brahminical revival. Beginning of the structural stone temples. Beginning of structural stone temples. ସେତେବେଳେ stone temples ର beginning ହେଲା. And ତାଙ୍କର feature ଥିଲା କି ଗର୍ଭଗୃହ ରହିବ, ଯାହାକୁ sanctum କହୁଛେ, and ଶିଖର বা টাওয়ার, এই দুইটা ফিচার ଥିଲା. ফর এক্সাম্পল ଦଶାବତାର ଟେମ୍ପଲ, ଯୋଉଟା କି अर्ली ନଗର ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ହେଇଛି, and it shows institutionalization of Hindu worship and priestly dominance. Institutionalization of Hindu worship and priestly dominance. 3. Buddhist and Jain artistic development. Buddhist and Jain artistic development. ସେତେବେଳେ rock cut cave architecture flourish କରୁଥିଲା. Architecture. अजंता caves रे जो murals अच्छी, they depicts the Jataka tales, royal patronage, compassion, and Sarnath Buddha images. Sarnath Buddha images सेगुड़िक actually depict करंती spiritual calmness, idealized human form of Buddha, and they reflected the Mahayana Buddhism. And devotion उपरे emphasize कले. 4. Socio-religious values in the Gupta art. ह्यूमन फॉर्म को आइडियलाइज करागला, जोटा कि हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी सिंबलाइज कला. ह्यूमन फॉर्म्स को आइडियलाइज, it idealized the human forms, symbolizing the harmony
and prosperity. Themes ଯେମିତି କି family life ହେଲା, court scenes, nature ସେଟା ବି ଥିଲା. It demonstrated social stability and elite patronage. Elite patronage. 5. Political and economic context. Political and economic context रे royal support मिलुथिला to whom, to Brahmins and Buddhist institutions. Prosperity enabled large scale artistic production also. Conclusion. Gupta art and architecture सेगुड़िक merely aesthetic achievement नथिले but तांकर cultural expression, but cultural expressions of India's evolving religious and social life. Okay, and by blending spirituality, humanism, and social life and technical excellence, they laid for the foundation of India's classical, artistic tradition and shaped its civilizational identity. Next question. The union budget is a reflection of the government's economic philosophy. In this context, critically examine the structure of receipts and expenditure in India's budgetary system. इंडिया जो यूनियन बजेट रही और यूनियन बजेट इज जनरल, एटा केवल गोटे मियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नुह. Not merely a financial statement, किंतु एटा गोटे policy document that mirrors government's economic philosophy, priorities, developmental strategy through its pattern of receipts and expenditure. First, we will study the structure of budgetary receipts. Revenue receipts. First होची tax revenue, then आसीबो non tax revenue. एटा ऑलरेडी डिस्कस हे सारची. टैक्स रेवेन्यूज रे जेमती हमर डायरेक्ट टैक्स जीवो, इनडायरेक्ट टैक्स जाउची. डायरेक्ट टैक्स रे जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स गोटे क्वेश्चन रे ऑलरेडी डिस्कस हेची, सो आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम हियर.
डबल डिस्कशन करिकी इनडायरेक्ट टैक्स समझ जानछन्ती जीएसटी जीव कस्टम्स ओके नॉन टैक्स रेवेन्यू कोन नॉन टैक्स रेवेन्यूज जेमती कि डिविडेंड्स फ्रॉम जो पीएसयूज रु जो डिविडेंड्स आसुची आरबीआई सरप्लस फी स्पेक्ट्रम चार्जेस एगुड़ा सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रे जाउची जे तार हम असेसमेंट करिकी देखिबा सो राइजिंग रिलायंस ऑन जीएसटी जीएसटी ऊपर जो रिलायंस बढ़ुची इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स द कंजम्पशन ड्रिवन compliance based fiscal model and high dependence on non-tax windfalls it shows the fiscal stress and adhocism okay second structure of budgetary expenditure budgetary expenditure भी दी प्रकार रहुची गोटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहुची रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे हमर जाउची सैलरीज पेंशन्स एंड ऑलरेडी डिस्कस हेची इंटरेस्ट पेमेंट हला सब्सिडी वेलफेयर स्कीम एउडा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे जाउची कैपिटल एक्सपेंडिचर रे कोन जिवो जोते कि एसेट क्रिएट होतिबो इंफ्रास्ट्रक्चर हला कि लोन्स टू स्टेट हला असेसमेंट आर करिकी देखिबा जदी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े ताहले इट सिग्नल्स अ कैपेक्स led growth philosophy. However, persistent high revenue expenditure it reflect करे structural rigidities and political compulsions also. What the structure reveals about economic philosophy? ये जो स्ट्रक्चर टा एबे चलची फॉलो होची एटा इकोनॉमिक फिलोसफी को कौन रिफ्लेक्ट करूची फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर फोकस करा जाउची एम्फसाइज करा जाउची एम्फसाइज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सो दे आर फॉलोइंग ग्रोथ फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉलो होची सेकंड लार्ज आउट वेलफेयर आउटलेज लार्ज वेलफेयर आउटलेज रे कौन हबो इंक्लूसिव डेवलपमेंट थर्ड moderate direct tax share limited redistribution fourth high borrowings माने acceptance of fiscal activism critical issues क्रिटिकल इश्यूज जदि देखिबा कि एबे भी रेवेन्यू डेफिसिट एबे भी परसिस्ट करूची परसिस्ट कौन करूची रेवेन्यू डेफिसिट सो एटा इंडिकेट करूची बोरोइंग फॉर कंजम्पशन एबे भी कंजम्पशन पाई की बोरो करा जाउची under investment in health and education जोड़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लिमिट करूचे
Third, over reliance on cesses weakens cooperative federalism. Okay, 8 ही चले space रे मैं conclusion दबा. Conclusion. India budgetary structure, India जो budgetary structure अच्छी, it reflects a pragmatic mix. Pragmatic mix of what? Pragmatic mix of growth, welfare and फिस्कल एक्टिविज्म. येट जो टैक्स रिफॉर्म्स, जो डीपर टैक्स रिफॉर्म्स रहिला, रैशनलाइज सब्सिडीज रहिला कि जो हायर सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट रहिला, सेगुडी को भी बहुत इंपॉर्टेंट बा एसेंशियल टू अलाइन विद द फिस्कल पॉलिसी विथ लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लास्ट क्वेश्चन. Discuss the Gupta period as a classical age of Indian history. Examine its contributions in the fields of administration, economy, science, and culture while also highlighting its limitations. Gupta period, जोटा कि 4th to 6th century CE, dated to that. It is widely regarded as the classical age or golden age of Indian history. कौन पाई से जो administration हैला, economy हैला, science and culture रे जो भी remarkable achievements करिथिले सेथिपाई. It marked the consolidation of political authority and the flowering of India's classical civilization. Body. Administrative contributions. First जो monarchical system थिला, monarchical system with strong central authority थिला. It had strong
central authority. Then efficient bureaucracy with provincial administration. लैंड ग्रांट्स दिया जाउथला टू ब्राह्मणस एंड ऑफिशियल्स जोटा कि गवर्नेंस को फर्दर स्ट्रेंथन करथला. लैंड ग्रांट्स. फोर्थ, जस्टिस सिस्टम बेस्ड ऑन धर्मशास्त्रस. रिलेटिव पीस जोटा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को एनश्योर करूथला. रिलेटिव पीस ensured the political stability and prosperity. Second, economic achievements. Economic achievement रे जाउथला तांकर first agrarian expansion जिबो through irrigation and land reclamation through जोड़ा से माने करूथले. Thriving internal and external trade. Okay, with Rome बा साउथ ईस्ट एशिया तांकर जो ट्रेड चलथला. Then gold coins बा dinars जोड़ा कुहा जाउथला, it reflected economic prosperity. Flourishing crafts, textile metallurgy हला इवरी हला. Then guilds बा श्रेणीज जाकु कुहा जाउथला एटा प्रोडक्शन और ट्रेड रेगुलेट करथला. Third, scientific and intellectual advances. Scientific and intellectual advances रे गोटे प्राइम एग्जांपल आर्यभट्ट. आर्यभट्ट तांकर कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बा डेसिमल सिस्टम, पाई, अर्थ रोटेशन. देन वराह मिहिर. से कौन देइथिले? एस्ट्रोनॉमी एंड मेटियोरोलॉजी. सुश्रुत and Charaka. Progress in surgery and medicine. Then amar kon asibo Nalanda. Nalanda University as a center of higher learning. 4. Cultural and artistic excellence. Temple architecture. Temple architecture previous slides रे already discuss ହେଇଛି. ଯେମିତି ଦଶାବତାର temple ଏଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ as an example. ଦେଓଗଡ଼ର sculpture. Sculpture ରେ ସାରନାଥ example ଦେଇ ହବ. ସାରନାଥ ବୁଦ୍ଧା images. Then Ajanta Sanskrit literature କାଳିଦାସଙ୍କର ବା ରଘୁବଂଶଙ୍କର এই সব এক্সাম্পলস দেই হব. কনসোলিডেশন অফ হিন্দু, বুদ্ধিস্ট and जैन ट्रेडिशंस आंकर कंसोलिडेशन. देन लिमिटेशन कौन थिला? व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द गुप्ता एज? कास्ट रिजिडिटी बहुत थिला एंड सोशल इनइक्वालिटीज भी थिला, भी प्रोमिनेंट थिला से टाइम रे. देयर वाज डिक्लाइन इन वुमेन स्टेटस. जेमती कि चाइल्ड मैरिज हला, रिड्यूस्ड एजुकेशन हला, feudal tendencies due to land grants or over dependence on agrarian revenue, political decline after Hun invasions. Conclusion. Gupta period, it represented high watermark in what? In India's classical civilization, blending political stability, intellectual brilliance, cultural creativity
ओके एंड डिस्पाइट इट्स सोशल एंड स्ट्रक्चरल लिमिटेशन तार जो एंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन थिला कंटिन्यू टू शेप इंडिया सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी एंड इंस्पायर मॉडर्न इंडिया परस्यूट ऑफ नॉलेज गवर्नेंस एंड कल्चरल एक्सलेंस एमती करी कंक्लूड करि परिबे सो एटा लास्ट क्वेश्चन थिला एंड विथ दिस आज डिस्कशन क्लास कंप्लीट हेची आई होप समस्ते मु जहा इन्फॉर्मेशन एटी प्रोवाइड कली ताकू नोट डाउन करिथिबे प्रॉपर्ली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करूथिबे ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग नेक्स्ट वीक आमे नेक्स्ट पेपर डिस्कस करिबा।